as a child, if I'm playing with this, I don't necessarily know कि ये Clapstore है. तो question is कि अगर Clapstore का नया toy आए तो मुझे क्यों loyalty होनी चाहिए उसके साथ? Okay. I think with toys now, and maybe we should look at Lego or Toys R Us. Lego is a great example. If music is the thing that's working, then you should have at least 20 SKUs in music. One with harmonium, one with tabla, one with flute, whatever, right? Okay. The stimulant is fine because I think toys are sold like like an Alice in Wonderland moment. Okay. A child will come and like, oh, there's 1,000 things in their room also or whatever. They'll have one of these. They'll have one with harmonium. They'll have one with saxophone, one whatever. Some with blowing into it, some with touching it, etc. If you have a large assortment, and maybe it's easier said than done because you'll have to think about क्या बनाएंगे कैसे. But I think that's the way to solve for repeats. Okay. So the biggest toy company is Lego, and how they solve for it is what looks like an infinite variety is actually a very small variety. Okay. So उनके वो parts हैं, वो उतना ही parts हैं. उसको अलग-अलग हिसाब से वो पैक में डाल दो तो वो अलग चीजें बन जाती है. पर उनकी supply complexity बहुत कम हो गई क्योंकि उनके मैन्युफैक्चरिंग तो कंसिस्टेंट बहुत हाई वॉल्यूम रॉ मटेरियल एक ही है हाई वॉल्यूम हो गई. अब उसके अंदर एक मोटर डाल दिया या इंजन डाल दिया या कंट्रोलर डाल दिया तो वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया. तो कंज्यूमर के लिए बहुत सारा वैरायटी है पर द कंपनी हैज सॉल्व्ड to have a very high repeat rate on components which they manufacture. Okay. In your case, your repeat rate is zero because there is no interoperability. Because अगर मैंने ये खरीद लिया और फिर मैंने वो खरीद लिया, why should this not plug on top of this and make a better system? Okay. Nice way of thinking. So if you're selling a system कि आपने पहले एक बेचा, उसके बाद दूसरा उससे कुछ कनेक्ट हो गया, तीसरा कुछ कनेक्ट हो गया या कलेक्शन बन गया, आप लबूबू बेच रहे हो. अब आपको पता नहीं कि वो डब्बे में क्या निकलेगा. पर आपको सारे चाहिए क्यों? क्योंकि सबके पास हैं पर ऑल ऑफ देम आर यूनिक बट दे आर अ सिस्टम. तो इसमें अगर आपको रिपीट चाहिए तो सिस्टम क्या है रिपीट के लिए? क्यों रिपीट होना चाहिए? So need to create a system. Create a way for the same consumer to buy multiple times. For which you might need to have more. So right now I think in the first stage acquiring more customers is fine. Right. Then going deeper with the customers through building out more SKUs in areas which work. Now ये 4 out of 8 is working. Right. तो इन 4 में क्या काम कर रहा है उससे वो 4 को 40 कैसे कर सकते हैं? For the sound. Let's say sound is the one thing that works. Or the phone. Let's say phone. Fidgeting with a phone-like device is what works. Right. Then you know that this is your core. Okay. Now इसमें आपको change करना है कुछ चीजें. Okay. Right, something moving, some string and a ball. Anything. So much. Then he's right. You could say, I want one of these. I want one of these. Then the customer also has more variety. So if I'm somebody who sees these toys, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सब Clapstore है? क्या what unites your range? Right. Initially we have worked on the packaging which is making us stand out. Packaging तो चला गया because वो तो फेंक दिया. अब प्रोडक्ट की बात करता हूँ. तो प्रोडक्ट में पहले तो ये क्लियर है कि ये सेम रेंज है पर ये एक घर में होंगे नहीं तो. Right. पर अब आपने ये भी बेच दिया. तो हाउ डू आई नो कि ये वही है? तो बिकॉज जब तक वो नहीं पता चलेगा आपका ब्रांड इज नॉट क्लियर. सो आई हैव मेरे पास 1000 टॉयज हैं 50 टॉयज हैं घर में. ये और ये सेम कंपनी के हैं या सेम ब्रांड है मुझे तो पता ही नहीं है. ओके. सो हमने इसके लिए एंडोर्स ब्रांड स्ट्रेटेजी यूज़ किया है. लाइक अभी ये मॉन्टेसरी कैटेगरी है तो इसका मॉन्टेसरी का ऑडियंस कंप्लीट अलग है, उसका थिंकिंग अलग है, फॉलोइंग अलग है, सब अलग है. सो व्हाट वी थॉट कि अगर हमने ये उसी ब्रांड के अंदर लॉन्च किया तो एग्जिस्टिंग ऑडियंस पूरा कंफ्यूज हो जाएगा. सो व्हाट वी आर डूइंग इट वी कोलैबोरेटेड विद द एजेंसी which doing creating a strategy for us and executing design strategy. So उसके अंदर हमने endorse brand strategy. For example, brand का नाम by Clapstore Toys, brand का नाम by Clapstore Toys, brand का नाम by Clapstore Toys for the 3 categories. That's how we are going with this. क्यों confuse हुआ customer For यार? for example मैंने devotional toy Montessori toy के सामने रखा तो customer पूरा जाके इनकी specialty Montessori toys के अंदर है. कोई नहीं सोचता इतना. Okay. I don't know what you think. I don't think customers think so much about category and all the way we are thinking. Because it's okay, like it's good. See, if you look at Apple, तो आप घड़ी खरीद लो या कंप्यूटर खरीद लो या अगर वो कार क्रिएट करते हैं तो कार खरीद लो. कैटेगरी अलग है, but there is some Apple-ness about each product. So you can see from a design language कि ये Apple का. So there are some very interesting things about your design language. There's a very interesting use of wood and natural materials. There's also this is also wood. So now there is wood. There's always some electronics and some technology. Yes. Electronics is the core of it. So for example, this and this, I can make out this look belongs to the same company. Okay. Because of the tactile switches and color. Like Lego के भी सब brands है, like Lego Creator, Lego ये like that.